Let's wait so everybody can join in. Hello, assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Can I start? Yes, I guess everyone is here now. I hope so. Let's start with Aisha. And whenever you guys are rejoining the meeting, please write some in the chat. Okay. There was some, yes, Aisha. Can you hear me, ma'am? Yes, I can hear you. So I have noticed that there was a guy named Sufyan Anwar, I guess, Mhm. and in a very young age he was teaching students, like poor children, and I think that was the best thing. And except that, I noticed that there were so many students who were not able to speak in their own mother tongue. English is important, Urdu is also important, but I think mother tongue is also very important. So, yeah, that's it. They were not able to speak. Thank you. Welcome. Yes, Tahir Shakil. Assalamu alaikum, ma'am. Am I audible? Yes, you are. Walaikum assalam. Ma'am, I have said something in our last class, so I will begin with my first point is some of the students feel shy to introduce themselves in their mother tongue. That's not good. We shouldn't forget our mother tongue. We know all the languages carefully, but that's not the good point. We forget our mother tongue. Second point is that all students have interesting hobbies, and all of them seem to be expert in their hobbies. And the last and very interesting thing which I observed that the interest of cleaning house and making food is still exists in young girls. So that's my point. Thank you. Okay, I think cleaning houses and cooking will always be a thing of interest for the girls. So they have to keep. But now I think girls are moving toward advanced. So Actually, cleaning and cooking is a survival skill. It's nothing to do with the gender. It's nothing to do with a boy or a girl.
Wherever you're No, going ma'am, to I'm live, you have to have a clean place to live, and then you have to know how to cook it so you can eat and you can live. ma'am, I know about this. I'm asking about the interest, ma'am. तो इसमें ये हो जाता है ना ताहिर कि इवन इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट है ही नहीं आपका, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा. दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू. मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इसी के बारे में. You said that it's very interesting to know that the girls still have this interest. उस पे I have said that कि whether you want to be interested or not, some things you have to do, like, and you need to do. तो उस लिहाज में ये आ जाता है. Even I was very impressed with some boys who could cook, because I guess, sorry, they are living alone in Karachi, so they know how to cook and everything, and some out of interest and some out of being uh, just productive male of their family, they are into cooking and everything, which is very nice. I do you cook? Yes, ma'am. Yes, ma'am, I can cook. What can you cook? What's your favorite dish to Ma'am, cook? my favorite dish is, ma'am, kadai. So, And I can cook kadai. I used to cook kadai and we friends together. okay. Usually we cook kadai at Saturday night. Good. Right. Thank you, Tahir. Thank you. Interesting point. Thank you. Thank you. Yes, Saleha. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Ma'am, the main thing I have noticed in the last class was there was a student, I don't remember his name, but he said that his father is a farmer and he is doing job to pay his fees. This is very impressive and we should do this too. And the second thing was there was a student who was skilled in dialogues, and she also said some dialogues. That's it. Ma'am. Oh, thank you. So, the things that we have noticed, basically, apart from our classmates' hobbies and their ability to speak, what we are doing at the moment. अभी हम क्या कर रहे हैं? You and I, what are we doing at the moment? Do you have any idea? और हम कैसे कर रहे हैं? When we were doing that activity, so what were we doing at that time? Raise your hand and then I will unmute you and you can say. दीपक गूगल मत करें, फंसा देगा ये आपको. ओके, यस, वेरी गुड. Asamul Haq. Asamul Haq, can you speak this point on the mic, please? I think I'm right. Okay, Deepak, I can, okay, that's. Yes, Fiza, you can speak. Can you hear me? Yeah, I can. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam.
which I just the last class is first of all lots of students they don't know their mother tongue. I think it's if I don't know my mother tongue, it's embarrassing for me because I'm Baloch, so I have to speak in Balochi. English and Urdu. Urdu, of course, are national language, so we should know about it. But they are the Balochi is my cultural language, so I know Balochi very well. That's the point. And second is lots of students, they are very good to use social media, but I don't like social media, so I think that's a spoiling of our time, and time is precious for us, so we shouldn't have spoil this sort of things. And third is they are very cooperative, and lots of students are very good. And one thing is that lots of bunch of students are beside beside teacher too, so it's a good thing. Thank you. Okay, Fiza, can you tell me what difference did you find in your mother tongue and the other language, या इंग्लिश हो गई या उर्दू हो गई, और आपकी बलोची में आपको क्या मेन डिफरेंस समझ में आया जब आप खुद बात करती हैं या किसी को बात करते हुए सुनती हैं तो? बलोच मीन्स कि मेरी बलोची में और दूसरे बंदे की बलोची में? नहीं, आपकी अपनी मदर टंग तो बलोची आपने बताई, राइट? जी। ठीक, तो when you speak बलोची or you hear someone who doesn't speak बलोची, जैसे अब मैं उर्दू में आपसे बात कर रही हूँ और as I speak English with you, तो आपको क्या डिफरेंस आता है समझ में between बलोची लैंग्वेज and English or उर्दू लैंग्वेज? Ma'am, see, you are not a Baloch, so if you speak with me in Urdu or English, it's okay. I find it okay because you are not Baloch, but you are Baloch, but you don't, you feel shy to speak Balochi with me. So I think it's not good for me. In my horizon, if I am Baloch and the next person is Baloch, so I usually speak in Balochi because it's my mother tongue, and he or she know very well. But the in front person, he or she is not Baloch. He belongs to other language. So I feel is quite interesting because I get to know new languages. That's Okay, thank you, Fiza. Yes, Asamul Haq, can you speak your points on mic? Let me unmute you if you're there. Okay. So what we are doing over here is that we are speaking. And why we are speaking? To communicate. ठीक है? When we are communicating, तो जब हम communicate कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? So whenever we are communicating, we are sharing our ideas, ठीक है? Our feelings, ठीक है? And
Yes. When See, whenever we are communicating, we are sharing our ideas, our thoughts, our feeling, and our knowledge. Basically, information और knowledge का हम exchange कर रहे होते हैं whenever we are speaking it. ठीक है? और ये हम क्यों करते हैं? Yes. Uh, First of all, when we are sharing knowledge, we need to learn something. That's why we are sharing knowledge. ठीक है? And then we are trying to know each other. तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्या चीज यूज करते हैं? अब्दुल सत्तार, आप बताएंगे? You can unmute yourself and you can speak. मैम हम साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स। सही। और लेकिन सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? साउंड का तो हम इस्तेमाल कर ही लेते हैं। कम्युनिकेशन हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, कुछ आइडिया है? मैम इशारों से भी कर सकते हैं और अपनी जबान यूज करके, वैसे भी काफी तरीके हैं मैम। सही। हैंड्स को यूज करके भी एक वो जो है ना, हम मैम बात कर सकते हैं और इशारों से भी उनको समझा सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। जाहिर सी है कुछ वो बोल नहीं सकते तो वो इशारों से भी समझाते हैं। और हम जो है वो खास करके ह्यूमन जो है वो स्पीकिंग से। वेरी गुड। सही। तो whenever we are trying to communicate, yes, Tahir, ठीक है। Yeah, you can raise hand so I can unmute you and you can speak. Don't worry. Yes. When there are three ways of communication. Number one, body language. Number two, sign language, and number three, our using our language, mouth. सही। ठीक है। तो Yes, कुछ ma'am. थोड़ा I know about बताएं। just three. ओके, कुछ थोड़ा बता देंगे कि साइन लैंग्वेज क्या होती है? मैम साइन लैंग्वेज इज लाइक जैसे हम आंखों से किसी को जैसे हम अगर पानी पीने जाते हैं तो हम हाथ ऐसे ऊपर करते हैं, बताते हैं कि पानी पीने जा रहा हूँ। अगर हम किसी को फोन करते हैं तो ऐसे रिंग का इशारा करते हैं, तो ये साइन लैंग्वेज होती है मैम, इशारों में अगर हम बात करें तो। सही। ठीक और है। अगर हम बॉडी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो अक्सर जैसे एक्सप्रेशन से हम बताते हैं कि कोई चीज अच्छी नहीं लगी, हम आंख को ऐसे कर लेते हैं, मुंह अजीब सा बना लेते हैं, तो दैट्स द बॉडी लैंग्वेज। एंड द लास्ट वन इज जो हम मुंह से बोलते हैं, आज जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन है। सही। तो for communication we can have three things. That one is to have a language. ठीक है। और communication जैसे हम सब ने अभी कर लिया डिस्कस, that to share ideas, knowledge, information. सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्पीकिंग एबिलिटी हर एक के पास तो नहीं होती। Many people who are dumb, सही है, they can't speak, so they use which language they use? People who can't speak, जल्दी से चैट पे लिखिए। यस, उनसान, इम्तियाज, राइट। और ये भी सही कह रहे हैं। तो दे यूज साइन लैंग्वेज। इसके अलावा साइंस और भी होते हैं, तो वो हमें क्या बताते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया?
अक्सर हम जाते हैं तो हमें स्टॉप साइंस नज़र आ जाता है और हमें क्या नाम के यू टर्न के साइंस नज़र आ जाते हैं, तो दीज आर आल्सो साइंस अवेलेबल देयर, तो वी कैन कम्युनिकेट थ्रू दीज एज वेल। अब क्या हुआ कि अ पर्सन जो नहीं बात कर सकता वो साइन लैंग्वेज के जरिए, जो लैंग्वेज है ऑलरेडी उसके जरिए आपसे बात करता है। लेकिन अगर आपको साइन लैंग्वेज नहीं भी आती तो आप कुछ इशारों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से आप अपनी बात जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम बोर्ड साइंस वगैरह देखते हैं, वो हमें कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं इजीली, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि आगे स्टॉप साइन है तो रुक जाओ, आगे यहाँ से दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, तो उस तरह का आपको सिग्नल्स वगैरह पे या रोड्स पे साइंस मिल जाते हैं, डेंजर साइन मिल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर आपको साइंस मिल जाते हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ हॉर्न ना बजाएं या ना इस तरह से कोई। यस उनसा। फॉर एग्जांपल मैम, जैसे कि कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है, हम्म उनके लिए हम ब्रेल सिस्टम यूज करते हैं हम्म ब्लाइंड के लिए, और जैसे कि कोई डीफ स्टूडेंट्स है तो उनके लिए अलग साइंस लैंग्वेज यूज की जाती है। वेरी गुड। यस ताहिर। Yes, ma'am. यू रेज योर हैंड, आपको कुछ कहना है? No, ma'am. Sorry. I will lower my hand after. ठीक। और कौन कौन से आपको साइंस के कुछ एग्जांपल्स अगर मालूम है तो यू कैन राइट। मैंने तो दो बता दिए, एक स्टॉप साइन बता दिया, एक हॉर्न वाला साइन बता दिया। अभी उनसा ने हमें ब्रेल के बारे में भी बता दिया, विच इज अ फॉर्म ऑफ अ रिटन कम्युनिकेशन। बट कलीमुल्ला, क्वेश्चन मैंने ये किया था कि थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर हमें नज़र आती हैं साइंस के ज़रिए, हो गई विजुअल कम्युनिकेशन, हो गई वर्बल कम्युनिकेशन, हो गई और फिर जेस्चर्स हो गए, तो ये इसके कोई एग्जांपल्स हैं आपके तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें से मैंने आपको साइन लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल बताए हैं, अब आगे आप भी बता सकते हैं कुछ, किन किन तरीके से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात किन किन तरीकों से हम अपने दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फायर साइन होता है अक्सर, ठीक है। वो फायर साइन ये बताता है कि यहाँ पे आपने सिगरेट वगैरह या नहीं जलानी, के पेट्रोल पंप के बाहर लगा हुआ होता है क्योंकि वहां से वो आग वगैरह पकड़ सकता है। अब जब हम लैंग्वेज की बात आती है तो हम लैंग्वेज को अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे बेटर वे जो है कम्युनिकेट करने का, वेरी गुड ऐसा मजाक, फॉर गिविंग साइन एंड द पार्किंग साइन, ठीक है। सबसे बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन जो समझा जाता है, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है, यानी कि आप डम या डेफ नहीं है या ब्लाइंड नहीं है, इज टू यूज अ लैंग्वेज, ठीक है, और इन अ प्रॉपर वे। अब आप कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसको एक अच्छे तरीके से यूज करें। अब जैसे अगर मुझे बलोची नहीं आती या सिंधी नहीं आती और मैं कोशिश करूं बोलने की, तो जाहिर सी बात है मुझसे वैसी अच्छी तरीके से मैं नहीं बोल पाऊंगी जिस अच्छे तरीके से जिनकी मदर टंग होगी वो बोल पाएंगे, ठीक है। तो दैट द अनदर टॉपिक, हाउ टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली,
बट हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जल्दी से लिखिए। ओके कौसर, आप बताएंगी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जो आपने अभी लिखा है। यस मैम, हम अल्फाबेट्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस के थ्रू जो है कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और ये बेसिक चीज होती है लैंग्वेज में, सही, आई गेस। ठीक, सही। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता और साउंड्स नहीं होते। मे बी मैम वो भी होता है, काफी चीजें होती हैं, लेकिन अभी ये अचानक से मेरे दिमाग में यही आया। आपने लिखा था, दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ। यू हैव रिटन यस मैम, अल्फाबेट्स, वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन। यस, वेरी गुड, यस मैम। सही। तो हमारी कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर उसकी वोकैबुलरी यानी होनी चाहिए, ठीक है, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशंस होनी चाहिए। इस तरह से ये एक आपकी लैंग्वेज बनती है। यू गाइस हैव स्टडीड लैंग्वेज एंड देयर फॉर्मेशन और सब कुछ डिटेल में पढ़ के आए हैं। इतना कोई वो नहीं है, इतना टेक्निकल जाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर बिल्कुल सिंपल बात अगर हम करते हैं तो लैंग्वेज की डेफिनेशन अगर बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में की जाए तो वो ये होती है कि लैंग्वेज इज अ टूल फॉर लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, वेरी गुड। और उसमें जाहिर सी बात है किसी भी लैंग्वेज में आपके पास अल्फाज होने चाहिए, उनको बोलने का तरीका होना चाहिए, उनका सलीका होना चाहिए, उसको आप लिखें सही तरीके से, उसको सही तरीके से लहजा इस्तेमाल करें, ग्रामर हो उसके अंदर, ठीक है। फिर ग्रामर में जब आ जाते हैं तो फिर हम उसके स्ट्रक्चर्स और सब चीज़ों पे आ जाते हैं, ठीक। पर अभी हम क्योंकि रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज पे बात नहीं करेंगे, जब हम बात करते हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की तो हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली साउंड्स पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कौन सी डिफरेंट साउंड्स इंट्रोडक्शन में नोट किए अपने क्लासमेट्स के। एक तो चीज़ हमने जो नोट की थी अपनी क्लासमेट्स की वो ये की थी कि चूंकि बहुत से क्लासमेट्स जो आपके थे मेरे स्टूडेंट्स वो शहर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, तो कराची में बचपन से लेके अब तक उनकी ज़्यादातर जो
स्पीकिंग थी वो उर्दू और इंग्लिश की थी, तो जिसकी वजह से वो थोड़े से परेशान थे मदर टंग में बात करने के लिए। लेकिन इनमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनकी मदर टंग ज्यादा स्ट्रांग थी बनिस्बत उनकी उर्दू या इंग्लिश के। अब आपको क्या लगता है ये किस वजह से होगा, कुछ आइडिया? यू कैन रेज योर हैंड एंड आई कैन अनम्यूट यू। यस, गाजी खान, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो इसलिए होता है क्योंकि घर में बोला जाता है, अम्मी अब्बू जो सिखाते हैं ना, इस वजह से वो हो जाता है फिर। और बस यही होता है मैम, फिर और क्या होता है बस। नहीं, देखें, जो जिनकी थोड़ी सी कमजोर है मदर टंग, ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स उनको नहीं सिखा रहे। कुछ आइडिया कि नहीं वो मैम, फिर वो घर में फिर कम बोल रहे होते हैं ना, उनके अम्मी अब्बू ज्यादा इंग्लिश और उर्दू में बात कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो लोग नहीं सीख पाते सही से। तो सही। थैंक यू गाजी। यस, अलिफिया। थैंक यू मैम। मैम इसकी एक वजह ये है कि ज्यादातर जो जैसे आपने बोला है कि इंग्लिश और उर्दू पे है ना ज्यादा मतलब लोगों को कमांड हासिल है, तो ये इसलिए है क्योंकि मैम उन लोगों ने वो लैंग्वेज हर जगह यूज की है। उनके घर में भी उर्दू बोली जाती होगी बनिस्बत उनकी मदर टंग पे कम फोकस दिया जाता होगा जितना उर्दू पे दिया जाता है। ओके, फिजा। यू कैन स्पीक। यस मैम। यस। मैम ये है कि मीन्स के वो लोग अपने घर पे अपनी मदर टंग नहीं कोई उर्दू या इंग्लिश यूज करते होंगे। और जैसे कि इंटीरियर सिंध में, मैं खुद इंटीरियर सिंध से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे ये है कि हम एक तो घर पे भी अपनी मदर टंग यानी कि मैं बलोची में हम लोग बात करते थे, पर जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ पे टीचर सिंधी में बात करते थे, वो उर्दू या इंग्लिश बहुत कम। तभी आप देख सकते हैं कि जो इंटीरियर सिंध से बिलोंग करते हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाती, बिकॉज इनका जो एक्सेंट होता है वो थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो भी ज्यादातर सिंधी में ही बात करते हैं। सही, ठीक, वेरी गुड। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? वी कैन रेज देयर हैंड। यस, माहिरा, कैन यू स्पीक? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्योंकि शायद अब उनकी सराउंडिंग्स की वजह से, या तो वेयर दे लिव, यानी मैं बलूच हूँ, मेरी बलोची इतनी खास अच्छी नहीं है क्योंकि जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ सब उर्दू स्पीकिंग थे। बचपन से मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे उर्दू स्पीकिंग थे, तो मेरी उर्दू मेरी बलोची से ज्यादा अच्छी है, मे बी बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स। सही, ठीक। प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंसेस आपको नजर आए जब भी हम? ओके, सॉरी, ठीक है ठीक है। देयर आर स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्पीक। रजब अली, यू कैन स्पीक। यस। मेन मसला ये होता है कि आपके इन्वायरमेंट में जो लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है उसमें आपको कमांड ज़्यादा होता है, वो आप ज़्यादा बोलते हैं। इसका मेन रीज़न इन्वायरमेंट है। ठीक। यस समीर, यू कैन स्पीक। में फर्क क्या होता है, ये फिटिंग कराची में ये एरिया की वजह से भी हो सकता है, और जो बेसिकली दूसरे लोग होते हैं वो हमें आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी समीर। आप चाहें तो चैट पे लिख लें या फिर दोबारा बोलने की कोशिश करें। यस। कैन यू हियर मी? यस। मैम मैंने कहा कि जैसे कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग कराची को कहते हैं कराची, और दूसरे एरिया के लोग
कराची को कहते हैं कराची, ये शायद सराउंडिंग की वजह से, एरिया की वजह से प्रोनाउंस ऐसे फर्क आ जाता है। Yes, Alfia. Can you guys hear me? Hello? Yeah, ma'am. Okay. अब्दुल सत्तार, अब सॉरी, भुट्टो करके एक स्टूडेंट का हैंड रेज हुआ था, वो बोल सकते हैं। और फिर अल्फिया का हैंड रेज था। यस, बोलना चाह रहे थे आप। कहाँ गए वो बच्चा? भुट्टो साहब, कैन यू स्पीक? यस मैम। यस। असल में ये होता है कि मतलब जो माहौल पे सब कुछ डिपेंड होता है। जैसे कि हमें इंटीरियर से हैं तो हमें मतलब सिंधी अच्छी तरह से आती है, क्योंकि हमने घर में भी सिंधी बोली है, ठीक है। उसके बाद जब हम स्कूल जाते थे तो हमें वहाँ जो हमारे उस्ताद साहिबान थे वो भी सिंधी में बात करते थे। और जो मतलब साइंस सब्जेक्ट था या सोशल स्टडी था, और जो सब सारे के सारे सब्जेक्ट्स थे वो भी हमें सिंधी में पढ़ाए जाते थे। इसीलिए हमारी मतलब सिंधी है जो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इंग्लिश एंड उर्दू।